Good morning, everyone. We were doing this question yesterday and we have done 3 parts. I hope it's clear now the steps you want to remember. First of all, you would like to check. Good morning, Beta. First of all, you would like to check whether your fractions are in standard form or not. Your rational numbers must be in standard form. And if that helps you compare the two rational numbers, well and good. अगर उसी step पे पता चल जाए. Otherwise, what we do is we cross multiply. There were some students who have done this question already and they had shared their work with me, but I guess some of you have not done. Is this for real, Jane? Such a long name he has. All right, let us complete the remaining parts and then we will do the one question that's left from this exercise. Question number 1, fourth part, minus 8 by 5, minus 7 by 4. The last part that we were doing. Excuse ma'am. Yes, Achyut. मैम मैंने पूछना था मैम, वो जो आपने कल होमवर्क के लिए दिए थे 2 पार्ट, मैम उसमें बिटवीन 0 और किसके बीच में आएगा? वो 0 और 1. You have to identify yourself. You have to identify it from the number line yourself. मैम वो समझ नहीं आ रहा था. Just watch the video I have uploaded for yesterday's class, and then if I think that will help you understand. If you just go over and watch that video, उसमें से वो वाला portion देखना where I was explaining this, how do you identify in between which two integers your rational number lies. For that, you would like to just reduce all those rational numbers into integers wherever possible. For example, if you are representing 7 by 8, so 8 by 8 will be an integer, minus 8 by 8 will be an integer. तो integers अगर आप represent कर रहे हो वहाँ पे, वो किए बिना आपको पता नहीं चलेगा. Bani has done this question. I'm going to just write down the answer for the third part. In third part, I just converted the rational number into standard form. We did not put the sign. As you can see, both rational numbers are now same. So the sign will be for equals to, and you can write down the answer in the terms of original values. This is something I always tell you. जब आंसर देना है तो original वाले rational numbers use करने हैं. Minus 7 by 8 and 14 over minus 16. These two rational numbers are actually equal to each other. Moving on to the fourth part, the rational numbers, both rational numbers are in standard form. And now I would just move on to second step, which is cross multiplication. Ma'am, what is the answer of third part? Third part, beta, we have equals to. As you can see, the first rational number, minus 7 by 8, was as such, usko humne change nahi kiya. Second rational number has been changed. Second rational number ko jab humne change kiya, wo bhi kya ban gaya? 7, minus 7 by 8. And as you can see, the two rational numbers are exactly the same. So the sign will be equals to. मैम 14 by minus 16. मैम हमने ऐसे लिख कर इज इक्वल टू साइन लगाना है कि minus 7 by 8 लिख कर लगाना है. जब आपने कंपेयर किया है, I think you can see it on the screen. I'm not sure. We have to show these steps. Like I have converted 14 by minus 16. इसकी conversion मैंने यहाँ दिखाई है ना. उसके बाद आप बीच में equals to sign put करके आंसर जब लिखोगे तो आपको ओरिजिनल वाली वैल्यूज यूज करनी है जो क्वेश्चन दिया था. फिर क्वेश्चन वाली वैल्यूज को यूज करके उसमें आपने प्रॉपर साइन लगाना है. एक्सक्यूज मी मैम. यस सहज. मैम जब हमने देख लिया कि जब हमने एक फ्रैक्शन की कटिंग की, एक रैशनल नंबर की कटिंग की, तो फिर वो सेम आ रहा है, तो फिर हमें आगे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना? नो नीड.
You can see it like it's exactly the same. Fraction का Okay, numerator ma'am. भी same है, denominator भी same है. That means two are equal. Okay, ma'am. Thank you. Now, fourth part, we have both rational numbers in the standard form. I'm going to cross multiplying the two rational numbers. I will have a -8 multiplied by 4 on one side. On the other side, I will have -7 multiplied by 5. This gives me -32 and -35. Compare the two integers to identify what sign you will put. -32 is greater than -35 and you can now give your answer. जो क्वेश्चन वाली वैल्यूज हैं वापस वो हम लिखेंगे और हम प्रॉपर साइन इंसर्ट करेंगे. यस भव्या. बड़ा नहीं मोटा साउंड. मेहर. Bhavya, beta, you've raised your hand. You have a question? Yes, ma'am. हाँ जी बेटा पूछ. हाँ जी. Like in C part, ma'am, we have make 14 by 6 minus 16 into standard form. Ma'am, when we are writing the final answer, we have to write the original values again. When we write the answer, it's actually better to give the answer by putting the sign of comparison in the question itself. जो क्वेश्चन में वैल्यूज दी है ना, कंपेयर करने के लिए तो हमें वो कहा था. तो इट इज बेटर कि जब आप फाइनल आंसर देते हो तो क्वेश्चन वाली वैल्यूज को यूज करके उसमें आप साइन इंसर्ट कर दो. Someone's entering with the name Galaxy J6. Bhavya, beta, is it clear now? Yes, ma'am. Okay. Let's take up the next part. We have 1 by -3, 1 minus 1 by 4. Now, out of these two, which one is in standard form? Minus 1 by 4. The one on the right, this is in standard form. This one needs to convert. So converting this into standard form, this will be -1 by 3. And this one is already okay. So this doesn't need to be converted. Now you can compare -1 by 3 and -1 by 4. Compare the two. We will be cross multiplying now. -1 multiplied by 4, -1 multiplied by 3. So you have -4 and -3 to be compared. Which sign to be inserted here? Lesser than. Lesser than. And now I can give the answer going back to the original values. 1 by -3. And -1 by 4. I have identified that the correct sign between these two for comparison would be lesser than. Excuse me, ma'am. Yes, Sahaj. मैम जब हमने फ्रैक्शंस करी थी तो फिर मैम हमने ये भी सीखा था कि जब सेम न्यूमरेटर है तो फिर जो छोटा डिनोमिनेटर होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी. तो फिर यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं है? Because when you put a negative sign, the larger value becomes smaller. Integers भी है ना. अगर आप normally compare करते 1 by 3 और 1 by 4 को, तो कौन सा बड़ा होता? 1 by 3 would be large. But क्योंकि माइनस लग गया, तो ये ऑपोजिट हो जाएंगे. For example, if you compare 5 and 7, 5 is smaller than 7, but अगर मैं -5 और -7 को कंपेयर करूं तो कौन सा साइन आएगा? Greater than. साइन चेंजेस, राइट? जो रिलेशन पॉजिटिव वैल्यूज में एग्जिस्ट करता है, अगर हम दोनों वैल्यूज को नेगेटिव में कन्वर्ट कर दें तो वो साइन ऑपोजिट हो जाएगा. Okay, ma'am. Thank you. मैम
Yes, Gurshan. मैम जो आपने 1/3 और 1/4 और मैम तो मैम उसमें 1/3 कैसे छोटा आया? 1/3 was larger. 1/3 was larger. Less parts, bigger the size. More parts, Okay, ma'am. smaller the size. 1/3 पॉजिटिव होता, 1/4 भी पॉजिटिव होता, तो 1/3 लार्जर होता. यहाँ पे नेगेटिव होने की वजह से it now has become smaller than 1/4, negative 1/4. See, you have done Okay, ma'am. fractions. Fractions की तरह है ये, exactly same नहीं है, because we are now working with positive and negative values. We have to keep in mind the rules of integers as well. So fractions के integers के rules जो combined हैं, वो सारे यहाँ पे use होने हैं. So sometimes it will seem like कि आप fractions का rule apply कर रहे हो, but that could give you wrong answer if you don't work out the rules of integers. Means integers को भूलना नहीं है, बहुत important है. Integers play a very important role while doing rational numbers, especially when you are comparing, performing addition and subtraction, multiplication, division. All the rules you followed in integers for arithmetic operations will be followed here, along with the rules you have for fractions. Means if you're going to add, for example, if you're going to add two rational numbers, you will add them exactly like you added fractions. They must be like rational numbers, and then you can add them. But when you are adding, you will have to see what sign they carry. If they are carrying positive sign, means both have the same sign, they will be added. They both are negative, they will be added. But they are, if they are having opposite signs, you have to subtract the values. So वहां पे फिर हम integers का rule use करते हैं. So you will be using the rules from fractions and integers side by side. You will have to be very careful. Sixth part, I think you can now tell directly what's going on here. The two rational numbers are actually same, yes. Equal. Sixth part, we have 5 by minus 11 and minus 5 by 11. So the first rational number can be written as minus 5 by 11. And now I can compare it with this one. These two are equal. Zero and minus 7 by 6. Now this can be compared without cross multiplication on the number line. If you try to show minus 7 by 6, we did this yesterday, representing a rational number on the number line. Where would minus 7 by 6 be? 0 is bigger. Left. Yes, on the left side, that's correct. Minus 7 by 6 will be on the left of 0, and all negative values are smaller than 0. All negative values are smaller than 0. All positive values are bigger than 0. So this is something you can write down if you don't remember. Or you can even cross multiply if you have forgotten these rules. But this right here can be done without cross multiplication. Excuse me, ma'am. Yes, Gagan? Ma'am, I know this rule, but I did it by cross multiplication only. That's okay. That's okay, completely fine. Cross multiplication will work in any case. So, but if in case you remember this rule and you put this sign directly, even then your answer will be correct. Jane is online. Jane, बच्चे आपने इतना बड़ा नेम रखा अपना? एक्सक्यूज मी मैम. Yes, Palak. मैम हम 6th पार्ट में ओरिजिनल वैल्यूज का भी लिखेंगे. I forgot to put the answer. I just forgot that. Let's write the answer. Yes, yes. We are supposed to write that down. So I will be giving the answer. Yes, minus 5 by minus 11 and minus 5 by 11. The two are equal. I hope you've done this. We are left with one question from this exercise. I would like to discuss that. It will take a little while.
If anyone's writing down, please let me know. Can you please wait for a moment? Okay. Done, ma'am. All right. Let's take up the next question, rather the first question of the exercise. After this, you have two more questions which are deleted, question number 9th and question number 10th. You can write that down. We will be doing question number 1 now. List 5 rational numbers between the values given here. So let's do this one by one. First of all, you have to identify 5 rational numbers between -1 and 0. So I'm just going to show you what happens on the number line, but while writing our answer, we are not going to draw the number line. We will be writing down our answer by some arithmetic operations. With the help of some arithmetic operations, we will give the answer for this. But to understand why we do so, let us just consider that if I had drawn a number line and I tried to show these values on the number line, what would happen? So this is a line here, and what I do usually is I divide the line into equal parts. And somewhere on this number line, I would have 0. On the right, I will have positive values. On the left side, I will have negative values. But if I try to find or see if there is any rational number between -1 and 0. So this here is -1 and this here is 0. इन दोनों के बीच में हमें rational numbers ढूंढने हैं. Okay, Bhavya, I'm coming back to this. Let's discuss this and then we'll come back to it. If you look at the number line, just simple number line, what you can see is -1 and 0 के बीच में कोई भी वैल्यू नहीं नजर आ रही आपको. 0 के पीछे जाएंगे तो -1 मिलेगा और 0 से आगे जाएंगे तो 1 मिलेगा. What we want to see is अगर इन दोनों के बीच में हमें कोई rational number मिल जाए. For that, what I can do is I can divide this number line into equal parts further, just like your scale is divided. जैसे आपका ruler होता है, between 2 centimeters there are some millimeters there marked, some millimeters are marked. Do you remember that? Just like that, like you can divide these portions between two integers into as many parts as you want. For example, what I will do here is I'm going to divide these into two parts. So ये जो portion है between integers, इनके बीच में let's just mark a point halfway. So what do you think this value will be? -0.5. -0.5, or I can say this will be -1/2. This will be 1/2. Yes, this will be 1 and a half. This will be -1 and a half.
this will be -2.5, so on. Yes, Achyut? Ma'am, can you re-explain, ma'am, what You got disconnected, I know. You got disconnected. This happens with you a lot of times. Let us say we have a number line and I represent my integers on it. I'm going to just mark them a little spaced out. So there is 0, this is 1, this is -1, this is -2. मुझे ढूंढने हैं रैशनल नंबर्स -1 और 0 के बीच में. एज सच इनके बीच में मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूंगी, ये जो इनके बीच में जगह है -1 से लेके 0 के बीच में ये जो स्पेस है, इस स्पेस को मैं इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ. और मुझे कितने पार्ट्स करने हैं, इट्स अप टू मी. आई कैन डिवाइड दिस पोर्शन इनटू 2 parts. These are 2 equal parts. Just ignore the rest of the number line. Focus on the values that you have here. So अगर हम सिर्फ ये वाला पोर्शन लेते हैं, 0 और -1 के बीच में ये पोर्शन है मेरे पास. एंड व्हाट आई हैव डन इज, मैंने इस पोर्शन को 2 हिस्सों में बांट दिया. So if I divide this portion into 2 parts, तो ये half हो जाएंगे. So that means the value right here will be -1/2. Or what I could have done was, I could have divided this portion into 5 parts or 6 parts or maybe 10 parts, like it is done on your ruler. जैसे आपके ruler पे divisions होती हैं. Do you remember that? Yes, ma'am. You can like do this. You can create as many parts as you want, and then you can identify what the values will be. Now, the easiest way to do this without the help of number line will be to change your rational numbers into equivalent rational numbers with same denominators. Like what I can do is, I have -1 and 0. The first step will be to write these as rational numbers. Right now, -1 and 0 तो integers हैं. अगर आपके पास इस तरह की values हैं जो rational नहीं हैं, तो इनको rational form में लिखना है आपको. तो simplest way to do that will be writing 1 in the denominator. सबसे पहले आप ये चेक करोगे कि जो values आपको question में दी हैं वो rational form में हैं या नहीं. अगर तो वो rational form में है, fine. अगर वो rational form में नहीं है तो उनको rational form में लिखना है. And to convert them into rational form, what we do is we write 1 in the denominator. After this, as for now, अगर हम simply इन दोनों को देखें, इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं आता. On the number line, -1 और 0 के बीच में कुछ भी नहीं आता. I'm going to convert these into equivalent rational numbers. I hope you remember कि equivalent rational numbers कैसे बनाते हैं. What was the way to convert your rational numbers into equivalent rational numbers? Ma'am, to multiply them with the 10, same 100 number. or 1000 or Yes. any number. Yes, we can multiply the rational numbers with the same number. Numerator, denominator दोनों को same value से multiply करना है. And that number will be of your choice. अब यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ा सा hint दे रही हूँ कि हम किससे multiply करें ताकि आंसर easily आ जाए. आपको जितने rational numbers ढूंढने हैं, question में बताया हुआ है. क्वेश्चन में कहा है 5 रैशनल नंबर्स ढूंढने हैं. हम 5 से लार्जर वैल्यू लेंगे. 5 नहीं लेना, उससे लार्जर वैल्यू लेनी है, उससे ज्यादा वैल्यूज मिलेगी हमें. तो आई एम गोइंग टू जस्ट मल्टीप्लाई विद 10. दैट्स द इजीएस्ट थिंग आई कैन डू. सो बोथ रैशनल नंबर्स टू बी मल्टीप्लाइड विद सेम वैल्यू. सो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो. You will have -10/10 and 0/10. And now if I had to show these on the number line, let us see if I had to show these on the number line, what would happen? Excuse me, ma'am. Yes, Bhavleen? Ma'am, why we divide it, why we multiply it with 10? You will just see what happened here.
अगर मैंने सिंपली नंबर लाइन पे ये वाली वैल्यूज शो की होती, इनके लिए अगर नंबर लाइन हम बनाएं तो इस तरह से नंबर लाइन बनती है. इज दैट राइट? अगर हम -1 और 0 को नंबर लाइन पे शो करते हैं तो ये नंबर लाइन बनती है. अगर हम ये वाली वैल्यूज लेते हैं, अब इनके लिए नंबर लाइन बनाते हैं हम. Divide your number line into equal parts. So you will have 0, 1 on the right, -1 on the left. What will be the denominator for each of these? 10. 10. 10. ये वाला रैशनल नंबर यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, 0/10 नजर आ रहा है आपको यहाँ पे. अब देखो इन दोनों के बीच में कितने रैशनल नंबर्स मिल रहे हैं आपको? 9. 9 मिल रहे हैं. आपको कितने चाहिए क्वेश्चन में? 5. So you can just take any 5 out of these. This is the advantage of multiplying the values with 10. अगर आप ऐसे चेक करो, look at this number line over here. अगर आप इस नंबर लाइन को देखते हो, इस नंबर लाइन में यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा हमें 0 और -1 के बीच में. Excuse ma'am. Yes, Bhavleen? Ma'am, it is important to multiply it with 10. No, you can multiply with any value. किससे मल्टीप्लाई करना है? रिमेंबर, आपको 5 वैल्यूज चाहिए तो उससे बड़ा नंबर लेना. 5 वैल्यूज ढूंढनी है ना आपको, तो 6, 7, 8, 9 कोई भी नंबर ले सकते हो आप. मैंने 10 इसलिए लिया बिकॉज 10 इज कन्वीनियंट. बट हम जब आंसर लिखेंगे हम नंबर लाइन नहीं बनाते. ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने दिखाया है. When we write the answer, we do without showing the number line. The number line will be in our head. नंबर लाइन हमारे माइंड में होगी, वहां पे नंबर लाइन बनाएंगे नहीं हम. आई एम गोइंग टू जस्ट शो यू हाउ यू विल राइट योर आंसर इफ दिस इज क्लियर. अगर हम ओरिजिनल वैल्यूज को नंबर लाइन पे शो करें, हो सकता है कि हमें उनके बीच में कोई भी रैशनल नंबर ना मिल रहा हो. तो हम क्या करेंगे, हम उन रैशनल नंबर्स को इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे. द डिनोमिनेटर मस्ट बी सेम. That's very important. जब आपने equivalent rational numbers बनाने हैं, the denominators must be same, means your rational numbers must be like rational numbers. और अगर आपके rational numbers like rational numbers नहीं हैं, what we can do is we can always take LCM and convert them into like rational numbers. So I'll just do a couple of parts with you and just let me know if that makes sense to you. Otherwise, we will discuss again. Let's write down 2 parts. 2 parts का आप एक बार हम आंसर लिख लें, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे. Please write down question number 9 and question number 10 are deleted. We are doing question number 1. First part is -1 and 0. So this will be -1/1 and 0/1. Ma'am, I can't write today also. I'm taking the screenshots. It's all right. This is step number 1. Your rational numbers must be like rational numbers. Now I'm going to convert these into equivalent rational numbers. And you can multiply them with any number of your choice, keeping in mind कि हमें 5 values ढूंढने के लिए बोला है, तो आप 5 से bigger value से multiply करोगे. It could be 6. I'm just taking 10 for convenience. And you have to multiply both your numerator and denominator. Any value multiplied with 0 becomes 0. So your numerator here is 0/10. And then identifying your
rational numbers between these two. Just observe what I'm doing here. Ignore the denominator. Ignore the denominator for a moment here. And think of them as just two integers. 0 और -10 के बीच में कौन कौन सी वैल्यूज आती हैं? अगर मुझे 0 से -10 तक जाना है, मुझे -1 मिलेगा, -2 मिलेगा, -3 मिलेगा, -4, -5, -6. In between, I'm just putting dashes. सारे नहीं मैं लिस्ट कर रही. You could only list 5. आपको 5 वैल्यूज चाहिए तो सिर्फ 5 लिस्ट कर सकते हो. और इन सभी का डिनोमिनेटर क्या होगा? 10. 10. Ma'am, please wait for a minute. Sure. Whatever is written in the bracket, वो एग्जाम में लिखना जरूरी नहीं है. सिर्फ आपको याद रखनी है ये स्टेप्स कि आप क्या कर रहे हो. सबसे पहले लाइक रैशनल नंबर्स बनाने हैं, उनको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली नजर आ जाएगा कि इनके बीच में कौन सी वैल्यूज आ रही हैं. उनमें से कोई 5 पिक करके अपना आंसर लिख देना आपको. Ma'am, it will be not done on number line. No, not at all. You have to do this just by doing this because sometimes rational numbers जो आपको दिए होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, वो बहुत दूर हो सकते हैं नंबर लाइन पे, तो फिर उनको शो करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा नंबर लाइन के ऊपर. Means you would spend half an hour making the number line. That's not justified. You should be able to do a question like this in just 5 minutes. मैम आंसर बस इतना ही है मैम. -7 -8 -9 या ना? यस, आप लिख सकते हो बेटा. सी, इन दोनों वैल्यूज के बीच में यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं, -1, -2, -3 से लेके -9 तक 9 वैल्यूज हैं. उन 9 वैल्यूज में से कोई 5 आप आंसर में लिस्ट कर सकते हो. एज यू कैन सी मैंने बीच में से एक मिस कर दी है. -4/10 मैंने नहीं लिखा. I had to write only 5. So I have written 5 at random. I'll just try to write down. Just a minute. I'll see if I can write all of the values here so that you can see what you have. This will be -8 and -9/10. So any 5 can be picked. Excuse me, ma'am. Yes, Sahaj.
मैम तो बेसिकली हम इस क्वेश्चन में यही कर रहे हैं कि जो हमें नंबर्स दिए हैं उनको हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स बना के थोड़ा बड़ा कर रहे हैं ताकि हमें अपना पता चल जाए कि बीच में क्या नंबर्स आ सकते हैं। हम उनको एनलार्ज नहीं कर रहे एक्चुअली। जब आप मल्टीप्लाई करते हो ना, वैल्यू तो सेम रहती है, वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही उनकी। वो देखने में लग रहा है कि 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो शायद वो बड़े हो गए हैं, बट एक्चुअल में 0 और -1 ही है। एक्चुअल में 0 और 1 ही है। द पर्पस ऑफ मल्टीप्लाइंग मीन्स जो स्पेस है उन दोनों के बीच में, उस स्पेस को हम कितने हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। तो हम उससे हेल्प हो जाती है। Yes, if I multiply with 2, that means जो जगह है 0 और -1 के बीच में, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, 2 हिस्से हो जाएंगे उसके। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो जो सेम जगह है उसके 3 पार्ट्स हो जाएंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव दिस पेन, इसके 2 पार्ट्स कर दूं, पेन का साइज यही रहेगा। If I do 2 parts, the parts will be bigger. If I do 3 parts, size of the pen is still the same, but if I do 3 parts, the size of those parts will be smaller. And if I do 10 parts of the same pen, imagine the parts will be smaller. I could even do 100 parts. The size will even be smaller. तो जो स्पेस है वो उतनी ही है, लेकिन जब हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स बना रहे हैं, इट लुक्स लाइक वी हैव एक्चुअली इंक्रीज देयर वैल्यू। ऐसा हुआ नहीं है, सिर्फ वो उनके बीच वाली जगह को डिवाइड करने के लिए कर रहे हैं। जितनी ज्यादा डिविजन्स करेंगे, जितने ज्यादा पार्ट्स हम क्रिएट करेंगे, आपको उतनी ज्यादा वैल्यूज मिलेंगी। इसलिए अगर आपको 5 रैशनल नंबर्स ढूंढने हैं तो मैंने बोला आप बिगर वैल्यू से मल्टीप्लाई करना, आपके पास उतनी ज्यादा पोर्शंस हो जाएंगे, फिर आप उसमें से पिक कर सकते हो। ओके मैम। Let's do one more part before the time's up. I'm going to take third part. Third part is different from first part. We have now 2 rational numbers as such given to us. I've got -4/5, -2/3. Keeping in mind step number 1, these should be like rational numbers. Are these like rational numbers? No ma'am. So we will convert. These are unlike. So we will have to convert. For that, we are going to take LCM of the denominators. 15. And now we convert -4/5, multiply with a number, the denominator should become 15, -2/3, multiply with the number, so that the denominator becomes 15. Here we'll multiply with 3, and on this side we are going to multiply with 5. Step 2 is to convert into equivalent rational numbers. You can multiply with any number of your choice. Your time is up actually. Just finish this and I will send the work in your WhatsApp group. All right? I'm going to end the meeting. I'll see you all in the next class. God bless you. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Ma'am, we will be sending this work. Yes, I will send this question in the group. Thank you, ma'am. Bye. Bye, beta. Bye, ma'am. Bye, ma'am.